इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली हम बच्चों बात करते हैं। सो दिस इज द जावा कोड, मैं इसको बाद में C++ के कोड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो बात करते हैं डायरेक्टली, चीजों को दाएं बाएं करने के बजाय डायरेक्टली हम अपनी अप्रोच की तरफ चलते हैं। वी हैव अ साइज, सो वी डिफाइन अ स्टैक के बजाय क्यू। स्मॉल में देखें C++ की अपनी बिल्ट इन लाइब्रेरी है। देयर इज एंड, देयर इज अ टॉप, नो इट्स नॉट अ टॉप, दिस इज front and a rear. So there are two variables, the two variables that mean that are defined in a class. These are the data member of the class, the front and the rear. In a stack, you can see we have to define front with 0 and rear with -1. अगर हम जावा का कोड भी देखें तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। If you can see in Java code, the front is 0 and the rear is -1. So again, go into the our code block G. So this is insert function. Insert. We want to insert the value into the queue, not stack. So same function है, इसीलिए इसमें कोई ऐसी मैं बड़ी कोई rocket science नहीं हम बना रहे. So if we want to insert in the value, then you must have to check the rear, because the rear is used to insert the value, and same as it is the rear. Increase the rear first and then this one. And what about the empty? The empty mean front. If front is equal to like, याद रखिएगा empty का कॉन्सेप्ट कहता है। अब यहां पर empty का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। कैसे? मैं इसके लिए थोड़ा सा ड्राई रन करना चाहूंगा, देन यू कैन सी, और फिर मैं इसी का पहला जो ड्रॉबैक है वो भी मैं साथ ही शेयर करता हूं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सर बात क्या कर रहे हैं। आपको पता चलना चाहिए ताकि एक ही तीर से मैं दो शिकार कर सकूं। Okay, so you can see this is your queue, like this is your queue, and in this queue we are defining the R, like R, and the R have 0, then 1 and 2 and 3 till 2. So the size is clear cut, the size is 7, and you have already known that the rear is there and the front is there. First one, if you want to insert the value into the queue, then you must have to check whether the queue is full or not. No, it's not equal to this one, so it increased by 1 and then insert the value, like there is 13. ऐसी random value डाल रहा हूं, आप बात को पिक कर लीजिएगा। Then same as it is, it insert the till values like 57 minus this one, 45, 11 and like 65. Okay, if you can see, the rear is there and the front is there. So whether the queue is empty or not, no, it's not empty. तो पहले कोड को देख लेते हैं ताकि बाद में हम इसके बारे में बात करें। empty का चेक के बजाय हम पहले remove के चेक को देखें। remove, so this is insert and this is remove. remove mean dequeue. So you have to check the empty. हम empty को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में बताऊंगा कि मैंने क्यों लिखा। this one क्यों लिखा वो बाद में बात करेंगे। Then we can say that the queue is empty under flow, and this is front, FRONT, and not decreased by 1, it increased by 1 in the postfix notation, and there is no queue top. अब किया क्या कि हम पहले वैल्यू को रिमूव करेंगे, empty का चेक अभी बात करनी है जी। वैल्यू को रिमूव करेंगे और then we increase the front by 1. So again, so we remove this one and increase by 1, remove this one, increase by 1, remove this one, increase by 1. Now remove the 45, increase by 1, remove this one and increase by 1, and whether the queue is empty or not, now remove this one and increase by 1. If you can see, if we remove these values from the queue, so tell me, any one of you, whether the queue is empty or not. Empty. Empty. But for example, like the size is 6. If the size is 6, then according to the previous check that was applied in stack, so it says that it's empty, but you can see that empty mean true, but you can see that the कि ये खाली है या like full है, but you can see that it is not empty or not, this is empty but not a full. You can see, एक ही तीर से मैं चाहता था दो शिकार कर सकूं कि empty तो है but full नहीं है, तो इस पे भी बात हमने करनी है। So हम कैसे लगाएंगे कि whether the queue is empty or not? The best approach is check whether the front is greater than and equal greater than rear or not.
if the front is greater than rear, you can also check in the constructor. If front is greater than rear, then this is no doubt in this question the queue is empty. Same as it is in this scenario, if we increase the rear and front one by one, you can see the queue is empty. So the simple is that front is 0 and the rear is -1. So if the front is greater than rear, then it means it is empty and it return true, otherwise it return false. इसीलिए भाई मैंने इसको फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर रखा, rather than greater than and equal to size -1. क्यों? अभी उसकी भी आगे भी फर्दर तस्दीक हो जाएगी. अच्छा, अब so this is q, so this is q dot insert, कोई डाटा डाल देते हैं. 12, this is 12. So these are the values that are put into the queue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And you can see how we can apply. This is q dot empty, deleted value is not s, it is q dot remove. Now execute this whole program and you can see the flow. पहले तो आप देख लें वैल्यू पहले कौन सी इंसर्ट हुई है, जरा बताइएगा पहले कौन सी इंसर्ट हुई है सामने 12 और लास्ट पर 93. Is there is any query, any ambiguity? सिंपल जी, कोई इसमें No, ऐसा sir. कोई ऐसा मुश्किल नहीं है जी, स्टैक की इंप्लीमेंटेशन ही की तरह का है, बट दिस इज अनदर डेटा स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड क्यू. और भाई इसके अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर कुछ ये चीजें यूं मेंशन की जाएंगी. अब अगर हम चलते हैं इस कोड की तरफ, तो भाई यहाँ पर बेसिकली इसको यूं होना चाहिए था, और ये जनाब आपका जो कंस्ट्रक्टर था इसे आपको कुछ यूं होना चाहिए था. बस देखें वो जावा का कोड है, ये सी प्लस प्लस का कोड है, और एम्पटी का जो फंक्शन है सेम एज इट इज, बट देयर मस्ट बी मेंशन द इन द फॉर्म ऑफ, वहां पे बूलियन लिखा हुआ है, यहाँ पे बूल है. रेयर इज इक्वल टू फ्रंट, इफ यू कैन सी ये फुल क्या है, तो रेयर इज इक्वल टू साइज -1, देन इट रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. ये तो ठीक हो गया, ये फुल क्या है, इस फुल वाला, और ये एम्पटी का है. ठीक है जी, और ये मैंने इसको भी बड़ा कर दिया. सो दिस इज एड फंक्शन. The add function, you can also call the add function, insert function, it's up to you. सेम वही चीज, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क ये था कि इस सी आउट की जगह पर वहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन है, एंड यू कैन सी दिस इज अ डिलीट फंक्शन. और भाई डिलीट फंक्शन जो से हमारा वो डिलीट लिख लें, रिमूव लिख लें, डीक्यू लिख लें. द डीक्यू इज बेसिकली द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर डिलीटिंग द वैल्यू फ्रॉम द क्यू.